present and past input only, not on future inputs. Causal. How we can define causal system? The function causal is defined as when the system's response is depend on present and past input, not on future inputs. So this is what the simple approach to understand any functions. तो ऐसे सिस्टम को causal कहा जाता है. Now causal means what? मराठी मध्ये कारणे. कारणे द्या. So systems causal means what? For example, if I consider this is my system and this system and I'm getting here it is output. Now output is depend on what? Present input and the past input. So if my system and output is depend on present input and past input, then I call such a system is called as causal. Then what is meant by non-causal system? So non-causal system, it is nothing but what? When the system's output is depend on present, past as well as future inputs also. Then such a system we call it as a non-causal system. ओके, होप सो यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन. आपको डेफिनेशन एक समझ में आ चुकी है कि कॉजल किसको कहते हैं और नॉन कॉजल. तो कॉजल मीन्स व्हाट? जिसका आउटपुट आपका प्रेजेंट और पास्ट में भी डिपेंड है. फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल इफ आई कंसीडर दिस इज माय y ऑफ t इज इक्वल्स टू, लेट अस से माय इनपुट इज x ऑफ t. नाउ आउटपुट y ऑफ t इज डिपेंड ऑन इनपुट x ऑफ t. तो इसमें जो t है, इस t के अकॉर्डिंगली आप इसको डिफाइन कीजिए. t is a present tense, t plus 1, t plus 2, t plus 3 is a future, t minus 1, t minus 2, t minus 3 is a past. Now my output is depend on present input, so system is causal. Hope so you understand. अभी सेकंड एग्जांपल, इसको हम causal कहते हैं. सेकंड इनपुट लेते हैं y of t is equals to x of t plus x of t minus 1. अभी इस केस में आपका आउटपुट प्रेजेंट इनपुट के ऊपर भी डिपेंड है एंड पास्ट इनपुट के ऊपर. इनपुट हुआ है बिकॉज एक्स वी ऑलवेज कंसिडर एज अ इनपुट. सो प्लीज अंडरस्टैंड, एक्स इज योर इनपुट and y is your output. So your output is depend on present input and past input. Then such a system we called it causal. Okay, next is what? Again example, y of t is equals to x of t plus x of t plus 1. Now in this case y of t output is depend on x of t plus x of t plus 1. तो ये तो प्रेजेंट इनपुट है, लेकिन दिस सैंपल इज व्हाट? फ्यूचर x of t plus 1. मतलब जो इसका प्रेजेंट स्टेट t है उसका एक इनपुट t plus 1 है. तो सच अ सिस्टम विच इज बेस्ड ऑन व्हाट? फ्यूचर सैंपल्स. सो वी कॉल्ड इट नॉन कॉजल. सो दिस सिस्टम्स विल बी माय नॉन कॉजल. So this is what the fundamentals of causal and non-causal. Okay, ये समझ में यहाँ तक किसी को कुछ डाउट्स है? ओके फाइन. अभी आपको ये समझ में आया है तो मुझे कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे एग्जांपल्स देता हूँ, उसके आंसर बताइए कि सिस्टम कॉजल है या नॉन कॉजल. सिस्टम कॉजल है नॉन कॉजल? नॉन कॉजल. श्योर, वेरी गुड. ये है नॉन कॉजल. वेरी गुड. System is y of t is equals to x of minus t. Causal. System is causal. Sure. Yes. System is. System is. Yes. System is non-causal. Hello. How it is causal? Causal कसं काय सांगा बरं? नॉन कॉजल.
का बरं नॉन कॉझल आहे? पास्ट आउटपुट म्हणजे पास्ट इनपुटवर डिपेंड आहे. नॉन कॉझल कधी असते? ज्यावेळेस आउटपुट इज डिपेंड ऑन प्रेझेंट अँड पास्ट इनपुट. सॉरी, प्रेझेंट, पास्ट अँड फ्युचर. फ्युचरवरती डिपेंड असेल तर नॉन कॉझल. फर्स्ट you mentioned it is causal. Okay, it is non-causal. Whatever it is, just let me know why it is causal or non-causal. Yes, कॉझल आहे कॉझल. system is causal. Okay. Other than this, कोणी सांगू शकता? जसं यांचं मत आहे कॉझल आहे, आणखी कोणी बोलू शकता? तुम्हाला काय वाटते, कॉझल आहे की नॉन कॉझल? बरं, व्हेरी गुड. कॉझल म्हणजे याचा अर्थ असा असतो ना की आउटपुट इज डिपेंड ऑन प्रेझेंट अँड पास्ट इनपुट. ओके. नाउ आई हैव मेंशन इट इज नॉन कॉझल. नाउ व्हाई इट इज से, देखिए अभी एग्जांपल लेते हैं. सपोज व्हेन t इज इक्वल्स टू 3 है, फॉर एग्जांपल. सो इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं, तो दैट बिकम्स y ऑफ 3 इज इक्वल्स टू x ऑफ -3. इस केस में your output y of t is depend on x of -3. So for y of 3, it is a past value. So system is causal. But my dear, value of t is from -infinity to infinity. So in this case, if I consider the value of t is equals to -2. When t is equals to -2, so the equation becomes y of -2 is equals to x of minus will be a plus. So here it is 2. Now tell me, for y of -2, output is depend on future input x of 2. For positive values it is fine, it is x of -3. बट t की वैल्यू निगेटिव भी तो हो सकती है. जब हम निगेटिव वैल्यू को कंसीडर करते हैं एज ए इनपुट, और जब आउटपुट में अप्लाई करते हैं तो निगेटिव निगेटिव बिकम्स पॉजिटिव. सो फॉर t इज इक्वल्स टू देयर, for t is equals to -2, output is what? Y of -2 is equals to x of +2. So for y of -2, this is what my in output, but depend on future values ना, -2 +2 पे depend करता है. So system is non-causal. Have you got it? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So yes, such a case we called it system is non-causal. And the one last is here it is y of t is equals to x square of t. System is causal or non-causal? कॉझल. वेरी गुड. सिस्टम इज causal. So likewise एग्जाम में पूछा जाता है 9 to 10 मार्क्स के लिए, स्टेट एंड एक्सप्लेन फॉलोइंग system is causal or non-causal, linear, time invariant and all these functions. So this is what the approach to calculate any functions. Okay. Now इसके बाद हमारा एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, वो है हमारा स्टेबल एंड अनस्टेबल. स्टेबल एंड अनस्टेबल में कंडीशन कहा जाता है स्टेबल. तो स्टेबल एंड अनस्टेबल में a system is said to be stable. ये सिस्टम तभी स्टेबल होती है when it satisfy the बीबो कंडीशंस. कोई भी सिस्टम दुनिया की सिग्नल processing में, if the system satisfy the बीबो condition, then such a system is called as stable system. Then you should have question, what is BIBO? BIBO stands for bounded input, bounded output. Means what? For example, this is my system. Now, if such a system, if I am applying bounded input, and if I am getting bounded output, then system is said to be a bounded input, bounded output, then system is a stable. Now, what is meant by bounded input? Bounded input means finite inputs. Now, finite means what? 5, 10, 15. जो infinities छोड़कर हम point को define करते हैं, such a point we called it bounded. If I apply finite input to the system and if I am getting finite output from the system, then such a system is called as stable system. But one more point, for condition
for stability is given as one range is from minus infinity to infinity mod of h of t into dt. This is the functions, and this function should be less than infinity. If h of t मतलब आपका रिस्पॉन्स, जैसे कि सिस्टम को हम यहाँ पे h करते डिफाइन, सो दिस h of t from minus infinity to plus infinity मतलब extreme low to extreme high condition, if this is integration means what summation of h of minus infinity to h of plus infinity, if this combined together is less than infinity, then such a system we called it stable system. पहले definitions क्या बताइए आपको? When we apply bounded input to this system and we are getting bounded output, such a system is called as stable system. Second, if this condition of stability, which one? Integration from minus infinity to infinity, h of t less than infinity, if this condition gets satisfied for such a system, we called it stable system. And the one more point from this, if system is linear and time invariant, I repeat, वो सिस्टम जो लीनियर भी है और टाइम इनवेरिएंट भी है, such a system is also called as stable system. For such a system, there is no need to calculate any particular problem. अब बिना solve किए, if it is a linear and time invariant, no, just go ahead and solve this problem. That will be stable system. That's it from the classification of system. तो अभी तक हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं इन केस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम में अभी तक हमने लिनियर, नॉन लिनियर, टाइम वेरिएंट, इनवेरिएंट, कॉजल, नॉन कॉजल, स्टैटिक, डायनामिक एंड स्टेबल एंड अनस्टेबल देखे हैं। और क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स में कंटिन्यूअस, डिजिटल, पीरियोडिक, अपीरियोडिक, इवन, ऑड, एनर्जी, पावर सिग्नल, सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक सिग्नल, एंड द लास्ट वन इज डिटरमिनिस्टिक एंड नॉन डिटरमिनिस्टिक, ये सिग्नल देखिए। तो कहीं ना कहीं पे अभी तक हमने प्रॉब्लम्स में टाइप्स ऑफ सिग्नल एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम का इंट्रोडक्शन दिया है। अभी क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सिग्नल्स एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम, यूनिवर्सिटी एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन दिस केस यू नीड टू कैलकुलेट और you need to define whether system is classification of system or classification of signals, like linear and non-linear है, वैसे कुछ प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। उसमें से कुछ प्रॉब्लम अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। सो पहला प्रॉब्लम हम लेते हैं, इन केस ऑफ एनी फंक्शंस स्केच, एक प्रॉब्लम पूछा जाता है, मैं आपको बताता हूँ। स्केच इवन एंड ऑड पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल, हमें इवन एंड ऑड को निकालना है फॉर द फॉलोइंग सिग्नल, और फॉलोइंग सिग्नल ऐसे दिया है। दिस इज ऑर्डर सिग्नल। अभी इस सिग्नल्स का हमें इवन पार्ट निकालना है और ऑड पार्ट निकालना है। नाउ फर्स्ट थिंग इज व्हाट, यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ओके, तो मुझे बताइए, इस केस में आपको इवन एंड ऑड पता होना चाहिए। पहले ये पता होना चाहिए कि वो सिग्नल है या सिस्टम है। क्या बता सकते हैं आपको इवन एंड ऑड ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्नल्स का है या सिस्टम का है? सिग्नल। वेरी गुड, ठीक है। अभी चलो, अभी हमें निकालना है सिग्नल्स एंड सिस्टम, सिग्नल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर इवन एंड ऑड पार्ट। अभी जो हमने थ्योरी डिस्कस किया है, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमें पता है इवन एंड ऑड को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो सबसे पहले हम इवन पार्ट को डिफाइन करते हैं, फिर ऑड पार्ट को। सो सी, द फर्स्ट इज इवन, इवन पार्ट ऑफ योर पर्टिकुलर सिग्नल्स। एक मिनट, इवन पार्ट को कैसे डिफाइन करते हैं आपको पता है? इट इज गिवन एज एक्स ई ऑफ टी। एक्स ई ऑफ टी से दिया जाता है, क्योंकि एक्स सफिक्स ई स्टैंड्स फॉर इवन ऑफ टी, और उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इन ब्रैकेट एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ
माइनस टी। ये हो गया आपका इवन पार्ट, ठीक है। और उसके बाद ऑड, ऑड इज गिवन एज एक्स ओ ऑफ टी इज इक्वल्स टू 1/2 एक्स ऑफ टी प्लस की जगह माइनस एक्स ऑफ माइनस टी। चलो देखिए, अभी प्रॉब्लम में आपको इवन एंड ऑड का फॉर्मूला पता है, आपको 1/2 पता है, एक्स ऑफ टी ऑलरेडी दिया है, एक्स ऑफ माइनस टी आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर 1/2 एक्स ऑफ टी से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 1/2 एक्स ऑफ माइनस टी से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसी तरह इवन पार्ट को स्केच कीजिए, उसके बाद ऑड पार्ट को स्केच करना है, दैट्स इट। इसको आपको सॉल्व करना है। अभी प्लॉटिंग करते हो कैसे करना है वो देखिए। सबसे पहले हमें इवन पार्ट के लिए एक्स ऑफ टी चाहिए, फिर एक्स ऑफ माइनस टी चाहिए, फिर इन दोनों की एडिशन एंड मल्टीप्लाइड बाय 1/2। तो हम सबसे पहले इवन पार्ट को स्केच करते हैं और उसके बाद ऑड पार्ट को स्केच करते हैं। तब तक के लिए इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। तो इवन पार्ट आपको दिया गया है एक्स सी ऑफ टी इज इक्वल्स टू, ब्लर हो रहा है क्या स्क्रीन आपके? ओके फाइन। सो इट इज गिवन एज 1/2 in bracket x of t plus x of minus t. Okay, so this is what your odd even signal. अभी इवन सिग्नल में हमें सबसे पहले क्या चाहिए? ये सिग्नल दिया है जिसमें x of t चाहिए और x of माइनस टी चाहिए। तो चलो ठीक है, हम पहले x of t निकाल देते हैं। तो x of माइनस टी हमें निकालना है। एक मिनट, नहीं क्वेश्चन नहीं, ये दिखाई दे रहा है आपको x of t का इक्वेशन? सर ब्लर होता है। ओके, ब्लर हो रहा है ना, जस्ट अभी दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके यस सर। ओके फाइन। हाँ, सो अभी हम इवन पार्ट को समझ लेते कैसे करना है। इवन पार्ट में हमें चाहिए एक्स ऑफ टी, उसके बाद एक्स ऑफ माइनस टी, फिर इन दोनों का सिग्नल एडिशन, देन मल्टीप्लिकेशन विथ 0.5। तो सबसे पहले हमारे पास एक्स ऑफ टी है, एक्स ऑफ टी के बाद हम निकालेंगे एक्स ऑफ माइनस टी। एक्स ऑफ माइनस टी कैसे निकालना ये आपको पता है। एक्स ऑफ माइनस टी इज व्हाट? इट इज अ मिरर इमेज, इट इज अ टाइम रिवर्सल ऑपरेशन। So this is what x of t. So this is what x of minus t. This is 0. This is amplitude 1. Here it is plus a to minus a and this becomes your a. ये हो गया हमारा x of minus t। ठीक है, अभी इसके बाद हमें क्या करना है? हमने x of t निकाला, x of minus t निकाला, फिर इन दोनों के एडिशन जो सिग्नल एडिशन करते हैं, और उसके बाद एट द सेम टाइम मैं दोनों भी क्या करता हूँ? मल्टीप्लीकेशन करता हूँ। और मल्टीप्लिकेशन करते वक्त आपको सिर्फ थोड़ा सा जो एम्पलीट्यूड है उसको 1 से 1/2 करते तो ये हाफ हो जाता है। तो उसी तरह अभी हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस इक्वेशंस को एक्सप्लोर करते हैं। 1/2 एक्स ऑफ टी प्लस 1/2 एक्स ऑफ माइनस टी। चलो 1/2 एक्स ऑफ टी, 1/2 एक्स ऑफ माइनस टी। अभी जो इक्वेशन दिया है इसको हम कन्वर्ट करते हैं 1/2 माइनस टी एंड 1/2 एक्स ऑफ टी। तो आपका प्लॉटिंग में आपको देखिए सबसे पहले क्या आता है? इक्वेशन 1/2 एक्स ऑफ टी, सो ये हो गया 0.5 0 ए 1/2 एक्स ऑफ टी। उसके बाद आपको निकालना 1/2 एक्स ऑफ माइनस टी। तो 1 एक्स ऑफ टी ये है, इस एक्स ऑफ टी के साथ आप मल्टीप्लाई करते 1/2 तो एम्पलीट्यूड 50% कम हो जाती है। तो ये आपका इक्वेशन बन जाता है 1/2
एक्स ऑफ माइनस टी 0, यहाँ पे बन जाता है 0.5, यहाँ पे माइनस है। चलो ये आपने दोनों बना लिए, आपको क्या एडिशन करना है, एक्स ऑफ टी 1/2 एक्स ऑफ टी प्लस 1/2 माइनस एक्स ऑफ टी, इन दोनों का जब एडिशन करते हैं तो इक्वेशन विल बी हियर इट इज, दैट इज एक्स ई ऑफ टी 0, यहाँ पे आ जाता है 0.5, यहाँ पे आ जाता है प्लस है, यहाँ पे आ जाता है माइनस है, ये हो गया आपका एक्स 1/2 एक्स ऑफ टी, हो गया एक्स ऑफ माइनस टी। So this is what your even part of signals. This is what even parts of your signal. यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछिए. If you have any questions with this, you can ask. Okay. सर एकदा रिपीट करा ना. ओके फाईन. सगळ्यात पहिले बघा, आपल्याला दिलेलं आहे की इनपुट सिग्नल दिलेला आहे एक्स ऑफ टी, ज्याचा आपल्याला इव्हन पार्ट आणि ऑड पार्ट काढायचा आहे. ओके, सो फर्स्ट हम एक्स ऑफ निकालते हैं. एक्स ऑफ टी इज व्हाट, फॉर्मूला इज गिवन हियर, एक्स ऑफ टी ई सफिक्स जो है वो स्टैंड फॉर द इवन. एक्स ई ऑफ टी का क्या होता है 1/2, ये हमने उस क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स में देखा था फॉर्मूला, 1/2 इन ब्रैकेट एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी. तो पहले ये देखिए, एक्स ऑफ टी ऑलरेडी इनपुट ओरिजिनल सिग्नल है, एक्स ऑफ माइनस टी ये टाइम रिवर्सल ऑपरेशन है. टाइम रिवर्सल ऑपरेशन हमने बेसिक सिग्नल ऑपरेशंस में देखा था. बेसिक सिग्नल ऑपरेशन में मतलब जहाँ पे सिग्नल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन टाइम्स के लिए, एम्पलीट्यूड्स के लिए टाइम रिवर्सल किया था, उसमें हमने किया था. टाइम रिवर्सल मींस और मिरर इमेज निकालते हैं, टी को माइनस टी से रिप्लेस करते हैं. तो अभी इस फॉर्मूला को हमने सबसे पहले स्प्लिट किया है, 1/2 इंटू एक्स ऑफ टी प्लस 1/2 इंटू एक्स ऑफ माइनस टी. मतलब हमें एक्स सी ऑफ टी निकालना है, तो सबसे पहले हमें निकालना है 1/2 एक्स ऑफ टी और 1/2 एक्स ऑफ माइनस टी. तो कहीं ना कहीं पे हमें एक्स सी ऑफ टी निकालने के लिए हमारे पास दो वेवफॉर्म चाहिए, विच वन, एक्स ऑफ टी एंड एक्स ऑफ माइनस टी. तो एक्स ऑफ टी ऑलरेडी इनपुट दिया है, इसीलिए हमने फिर एक्स ऑफ माइनस टी निकाला. एक्स ऑफ माइनस टी में क्या होता है, दिस इमेज इट चेंज टू दिस इमेज. तो ये आपका राइट हैंड साइड इट चेंज टू लेफ्ट हैंड साइड, मतलब 0 टू प्लस ए, एक्स ऑफ माइनस टी में 0 टू माइनस ए बन जाता है. इसीलिए ये राइट हैंड साइड का जितना भी साइज है वो लेफ्ट हैंड साइड में स्विच हो जाता है, मतलब ये जो है वर्टिकल एक्सिस इससे रोटेट होता है. तो हमने एक्स ऑफ टी निकाला, फिर एक्स ऑफ माइनस टी निकाला, लेकिन ये तो सिंपल एक्स ऑफ टी एंड एक्स ऑफ माइनस टी है. हमें यहाँ पे 1/2 इंटू 1/2 फंक्शन चाहिए, इसीलिए हमने क्या किया, फिर सेपरेट निकाला है. तो हमने सबसे पहले 1/2 एक्स ऑफ टी निकाला, 1/2 एक्स ऑफ टी. तो जो ऑलरेडी ओरिजिनल एक्स ऑफ टी है उसके साथ हमने 1/2 मल्टीप्लाई किया. 1/2 मल्टीप्लाई करना है मतलब आप एम्पलीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करते हो, 1 के साथ 1/2 मल्टीप्लाई किया तो ये 1/2 मतलब 0.5 बन जाता है. तो कहीं ना कहीं पे एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो जाती है यहाँ पे. ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पोर्शन. सेकंड पोर्शन निकाला इन एडिशन 1/2 एक्स ऑफ माइनस टी. उसी तरह एक्स ऑफ माइनस टी का जो सिग्नल्स था उसको 1 से 1/2 किया और वो भी थोड़ा सा 50% रिड्यूस हो गया, और ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का सिग्नल. अभी सिंपल हमें क्या है, दोनों सिग्नल निकाल दिए, हमें एडिशन करनी है. एडिशन के लिए सबसे पहले था 1/2 एक्स ऑफ टी, फिर 1/2 एक्स ऑफ माइनस टी. तो 1/2 एक्स ऑफ टी यहाँ पे प्लॉट किया, और एडिशन में सिग्नल्स 0 था, और राइट लेफ्ट हैंड साइड में सिग्नल इधर से 0 था, तो ये सिग्नल यहाँ पे प्लॉट किया, ये सिग्नल इसको प्लॉट कर दिया. रेंज होगी -a to a. दैट इज व्हाट सिग्नल एडिशन. कळलं का? येस सर. ओके, जर तुम्हाला हे याचे स्क्रीनशॉट घेऊन घ्यायचं. जर तुम्हाला हे समजलं असेल तर देन यू शुड बी इन अ पोझिशन टू सॉल्व एक्स ओ ऑफ टी. ऑड सिग्नल सॉल्व करायला पाहिजे. ऑड सिग्नल मध्ये काय करायचं माहितीये का, मी आता थोडा याला इरेज करतो, ठीक आहे, स्क्रीनशॉट घेऊन घ्यायचा. ऑड सिग्नल्स मध्ये काहीच फरक नाही, फक्त एक्स ओ ऑफ टी जो आहे त्याचा फॉर्म्युला चेंज होतो, तो इथे सफिक्स ओ येईल, फॉर्म्युला राहील 1/2 एक्स ऑफ टी प्लस च्या जागेवर फक्त मायनस येईल. तो मायनस आला की इथे पण परत मायनस येईल, बरोबर आहे. मग हाही मायनस आला, मग त्याच्यानंतर मी 1/2 हा काढला, 1/2 हा काढला. आता मला एक सांगा, एक्स ओ ऑफ टी ची वेवफॉर्म कशी आहे, ऑड सिग्नल कसा निघेल्यामध्ये, हा तर इव्हन झाला, फक्त प्लसच्या ठिकाणी मायनस एवढं इतकाच एक फरक आहे इव्हन टू ऑड मध्ये. कोणी सांगू शकाल? लेफ्ट हैंड साइड सिग्नल हम्म, शिफ्ट डाउनवर्ड व्हेरी गुड. थर्ड क्वाड्रंट.
Very good, very good. So XO of t signal will change. So then my signals will be like this. XO of t, it is t 0.5 हा झाला 0.5 a हा झाला माझा फर्स्ट 1/2 x ऑफ टी. त्यानंतर मला काढायचा मायनस 1/2 x ऑफ मायनस टी. ठीक आहे. आता माझ्याकडे मायनस असल्यामुळे सिग्नल निगेटिव्ह जाईल. पहिल्या केसमध्ये पॉझिटिव्ह था बरोबर आहे, म्हणून -1/2. सर -1/2 असल्यामुळे खालचं मॅग्निट्यूड मी घेईल -5 आणि एक्स ऑफ मायनस टी हा आहे जो लेफ्ट हँड साईडला, त्याला खाली प्लॉट करावं लागेल. हे राहील -a, हा राहील -0.5. So this is what the approach. So this is what odd part of your signals. दिसतंय का? This is what your odd parts of your signals. होप सो आता असे कुठलेही प्रॉब्लेम्स आले तर तुम्ही त्याला सॉल्व्ह करू शकाल. So this is what the approach to solve any particular problem. Now आता एक सॉल्व्ह करा बरं तुम्ही. तुम्हाला एक प्रॉब्लेम देतो ॲज अ इनपुट x of t, the simple b this is what a problem. यामध्ये ट्रायंग्युलर सिग्नल्स आहे. So how my output will be? Even and odd parts. हॅलो, याला कसं सॉल्व्ह कराल? एक मिनिट थांबून जा, आता मीच विचारतो. याला कसं सॉल्व्ह करा? ओके, त्याच्यापूर्वी मला अटेंडन्स द्या बरं. आयुषी ठाकरे, प्रेझेंट सर. अभिषेक देशमुख, अभिषेक देशमुख, आचल बाबरे, येस सर. आकांक्षा पडोले, अनिरुद्ध डेंगे, प्रेझेंट सर. अंजली, प्रेझेंट सर. अथर्व, प्रेझेंट सर. आयुष ठाकरे, प्रेझेंट सर. चिराग, प्रेझेंट सर. दर्शन, प्रेझेंट सर. देवेश, प्रेझेंट सर. धनश्री, दिव्या, प्रेझेंट सर. गौरव, येस सर. गौरव सर. गायत्री, येस सर. गुरुदास, प्रेझेंट सर. ईशा भुयार, प्रेझेंट सर. लौकिक, प्रेझेंट सर. माधव, प्रेझेंट सर. मिहिर, प्रेझेंट सर. नकुल, प्रेझेंट सर. नेहा जवंजाळ, नेहा, निशिता, प्रेझेंट सर. निशिता, प्रेझेंट सर. पार्थ, प्रेझेंट सर. पयोष्णी, प्रेझेंट सर. पूजा, प्रेझेंट सर. प्रगती,
Present, sir. प्रगती विजयराव, Present, sir. राम मालानी, रोहिणी काशीकर, Present, sir. रूपक, Present, sir. ऋषिकेश, Present, sir. समीक्षा, Present, sir. सार्थक, Present, sir. सतवान, Present, sir. श्रेयश, Present, sir. श्रीकांत, Present, sir. सुजीत खोजरे, Present, sir. तेजस, Present, sir. तेजस ठाकरे, यस, वैष्णवी धुमाने, Present, sir. वेदांती सावरकर, Present, sir. वेंकटेश, Present, sir. विभा गावंडे, Present, sir. यश विलायतकर, Present, sir. नेहा जवंजाळ, नेहा, and अभिषेक देशमुख. Present, sir. Okay, fine. So now the concept is what? आपको इसको निकालना है, सॉल्व करना है, तो प्लीज कंसीडर दिस एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन. इसका आंसर आने के बाद आप मुझे बता दीजिए कि इसको सॉल्व कैसे करना है. दिस इज व्हाट, आपको इसका इवन एंड ऑड पार्ट्स को भी निकालना है. इसके बाद मैं एक प्रॉब्लम आपको अभी डिस्कस करते हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है. क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा है, सिग्नल्स ऑपरेशन देखे. सिग्नल ऑपरेशन में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, टाइम स्केलिंग, एम्पलीट्यूड स्केलिंग, शिफ्टिंग एंड टाइम रिवर्सल, ये ऑपरेशन हमने परफॉर्म किए. उसके बाद क्लासिफिकेशन सिग्नल्स में एनालॉग, डिजिटल, इवन, ऑड, एनर्जी, पावर, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिक, पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल देखा. उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, लीनियर, नॉन लीनियर, टाइम वेरिएंट, इनवेरिएंट, स्टेबल, अनस्टेबल, कॉजल, नॉन कॉजल, स्टैटिक, डायनामिक, इतना डिस्कशन हो चुका है. इन सारे डिस्कशंस में आपको अभी प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं बार बार. देन इस सिग्नल को कैसे जनरेट करेंगे, उस सिग्नल को कैसे जनरेट करेंगे. उसी तरह अभी आपको मैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम देता हूँ. उसमें आपको निकालना है कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल इज डिफाइंड एज, एक सिग्नल है जिसको डिफाइन किया है कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल x of t is equals to, the function is t for the range 0, t is greater than or equals to 3, and the function is 0 when t is greater than 0, t is greater than 3. और इस केस में आपको फाइंड करना है, फाइंड x of minus t and x of 2 minus t. तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है. तो सबसे पहले अभी देखिए, हर बार आपको वेवफॉर्म रेडीमेड नहीं मिलेंगे प्रॉब्लम्स में. कुछ प्रॉब्लम में आपको एक एडिशनल टास्क दिया जाता है जिसमें प्रॉब्लम्स को फिर से जनरेट करना है. तो इस केस में जैसे कि अभी इवन एंड ऑड पार्ट्स को हम बताते हैं, मैं ये भी कर सकता हूँ कि इसी प्रॉब्लम्स को मैं घुमा फिरा कि इवन एंड ऑड्स को भी कर सकता हूँ. चलिए, इन एडिशन विथ कैलकुलेट इवन एंड ऑड पार्ट ऑफ दिस सिग्नल. इसका इवन भी और ऑड भी निकलना है. जस्ट अ मिनट, मजा बोर्ड थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, ठीक है. सो इवन एंड ऑड भी निकलना है. तो नाउ माय क्वेश्चन इज टू यू ऑल, इफ यू आर जेन्युइनली गेटिंग द थिंग्स, इसका एक्स ऑफ टी कैसे आएगा बता सकते हैं मुझे ग्राफिकली? इसका ग्राफ कैसे आएगा ये देखिए, मैं फिर से बता दूं. ये प्रॉब्लम यहाँ तक है बीपी लाठी का, और ये जो है मैंने मेरे मन से बनाया हुआ, क्योंकि हम मेरे पास उतना फ्रीडम है, मैं प्रॉब्लम्स अपने क्रिएट कर सकता हूँ. सबसे पहले आपको इसका स्केच करना, मतलब एक्स ऑफ टी जनरेट करना है ग्राफिकली. उसके बाद आपको एक्स ऑफ माइनस टी निकालना है, फिर एक्स ऑफ 2 माइनस टी, उसके बाद इवन एंड ऑड पार्ट. तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन टू यू ऑल, एक्स ऑफ टी को स्केच कैसे करो? क्या बता सकते एक्स ऑफ टी कैसे आएगा? मराठीत बोला जर तुम्हाला हे समजत असेल. एक्स ऑफ टी कसं येईल ते तर सांगू शकता तुम्ही? चला सांगा बरं, या तीन पैकी कुठलं एक्स ऑफ टी असेल जे कंडिशन तुम्हाला दिलेली आहे?
एक्स ऑफ टी यापैकी कुठल्या 3 कंडिशन सॅटिस्फाय करतात? म्हणजे हे या इक्वेशन साठी कुठली वेव्हफॉर्म राहू शकते? 1, 2 and 3. Sir, two. First. फर्स्ट First, sir. The second. म्हणजे मला एक सांगा, कंडिशन काय दिलेली आहे की एक्स ऑफ टी आपल्याला स्केच करायचा आहे. यावेळेस कंडिशन दिली आपल्याला स्वतःला तो जनरेट करायचा आहे. जनरेट करताना आता मी हे 3 प्रकारचे केलेले आहे, फर्स्ट, सेकंड अँड थर्ड. त्याच्यात कंडिशन दिलेली आहे की टी एक्झिस्ट फॉर 0 to 3 आणि व्हेन टी इज ग्रेटर दॅन 0 फंक्शन इज 0. मी 3 वेव्हफॉर्म काढलेले आहे. तर तुम्हाला कुठली वाटते की ह्या कंडिशनला कोणती वेव्हफॉर्म जस्टिफाय होते? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? फर्स्ट. ओके, First. कोणाला सेकंड वाटते? शुअर? फर्स्ट. कोणाला सेकंड आणि थर्ड नाही वाटत ना? येस और नो? ओके, म्हणजे फर्स्ट कन्फर्म आहे. चला नो, याला मी सेकंडला आणि थर्डला इरेज करतो. सो आता बघा, तुम्ही जसं सांगितलं की नाही, द कंडीशन इज फर्स्ट. वेरी गुड. नाउ हम इक्वेशंस को जनरेट करते हैं. हमें प्लॉट करना है एक्स ऑफ टी. एक्स ऑफ टी, हियर इट इज टी, हियर इट इज 0. ठीक आहे. आपल्याकडे कंडिशन्स काय दिलेले आहेत? कंडिशन दिलेलं आहे की एक्स ऑफ टी विल बी अ टी व्हेन 0 to 3. 0 to 3 मध्ये दिलेलं आहे. 0 to 3. 0 to 3 मध्ये काय काय असते? 1 and 2. आणि आपल्याला अँप्लिट्यूड पण दिलेला आहे. आपण घेऊ 3, 2 and 1. ठीक आहे. आणि याला असं प्लॉटिंग. आता मला सांगा, when it is 0, it is 0 when t is greater than 3. टी ची व्हॅल्यू जेव्हा 3 पेक्षा जास्त राहील त्यावेळेस ती 0 राहील. म्हणून टी नंतर 3 नंतर सगळ्या व्हॅल्यू 0 आहे. मी त्या काही प्लॉट केलेल्या नाही. आता मला करायचं आहे पहिली कंडिशन. पहिली कंडिशन काय सांगते की इट इज टी फॉर टी इज लेस दॅन 0 to 3. म्हणजे जी टी ची व्हॅल्यू राहील ती मला प्लॉट करायची आहे. सगळ्यात पहिले ही हॉरिझॉन्टल लाईन. सगळ्यात पहिले, एक मिनिट, मला फोन आला. सॉरी डियर, थोड़ा कॉलेज से फोन आया था इसलिए. हा बघा, सो कंडिशन इज व्हॉट. आता हे काढलेलं आहे. इथं काय म्हणतो, माझं म्हणणं ऐकून घ्या तुम्ही. थोडा वेळ लागला चालेल, आपण एक्स्ट्रा लेक्चर पण घेऊ प्रॉब्लेम्सला, नोट वरी. इथे काय म्हटलेलं आहे, ही व्हॅल्यू टी राहील व्हेन द कंडिशन इज सॅटिस्फाईड. आणि कंडिशन काय आहे? कंडिशन इज टी ची व्हॅल्यू टी राहील. आता मला सांगा, सगळ्यात पहिले ही हॉरिझॉन्टल लाईन तुम्हाला व्यवस्थित दिसेल बघा. ही हॉरिझॉन्टल लाईन ज्यावेळेस टी ची व्हॅल्यू 0 आहे, कारण हे टी 1, 2, 3 ही हॉरिझॉन्टल लाईन आहे. ज्यावेळेस टी ची व्हॅल्यू 0 आहे त्यावेळेस ही व्हॅल्यू टीच राहील. म्हणजे काय राहील? 0. म्हणजे या पोझिशनला ही व्हॅल्यू 0 राहील. ज्यावेळेस
टी ची व्हॅल्यू 1 राहील. ज्यावेळेस तुम्हाला लक्षात येते का मला कळत नाहीये, ज्यावेळेस टी ची व्हॅल्यू 1 राहील त्यावेळेस पण व्हॅल्यू टीच राहील, म्हणजे टी च्या व्हॅल्यूच्या 1 च्या वेळेस हे 1च राहील. व्हेन टी इज इक्वल्स टू 2 so it is 2, and when t is equals to 3 it is 3. So plot will be like this. Not like this. आलंय का लक्षात? येस सर. ओके, तर हा झाला तुमचा ऍक्च्युअल ग्राफ. तर ग्राफ वाचताना हे बघा, इथे दिलेलं आहे टी, जी व्हॅल्यू 0 to 3 मध्ये राहील ती व्हॅल्यू टी राहील. समजा टी ची व्हॅल्यू 0 आहे तर तो 0 राहील, टी ची व्हॅल्यू 1 आहे तर हा टी 1 राहील, टी ची व्हॅल्यू 2 राहील तर 2 राहील, टी ची व्हॅल्यू 3 राहील तर 3 राहील. आता मी याच्यामध्ये थोडासा एक चेंज करतो. जर इथे टी स्क्वेअर असतं, उदाहरण घ्या, तर हा ग्राफ कसा झाला असता? ग्राफ चेंज झाला असता. चेंज म्हणजे नक्की कसा झाला असता? तो ग्राफ 0च्या ठिकाणी 0 असता, 1च्या ठिकाणी पण 1, कारण 0चा स्क्वेअर 0 असतो, 1चा स्क्वेअर 1, पण 2चा स्क्वेअर 4 असता आणि 3चा स्क्वेअर 9. तर तो ग्राफ असा झाला असता, असा. प्लीज try to understand how to generate wave from an equation. So this is what the way to calculate this. आता तुम्हाला हे कळलंय की या प्रॉब्लेमचं ऍक्च्युअल एक्स ऑफ टी कसं स्केच आहे. सो ऍक्च्युअल एक्स ऑफ टी इज लाईक दिस. ऍक्च्युअल एक्स ऑफ टी कसं राहील? 0 3 एक्स ऑफ टी 3 and टी. फाईन, आलं लक्षात इथपर्यंत? आता तुम्हाला या एक्स ऑफ टी साठी काय करायचं आहे? एक्स ऑफ मायनस टी काढायचा आहे, एक्स ऑफ 2 मायनस टी काढायचा. हे बीपीएलआरटी मधला प्रॉब्लेम्स आहे. ओके, आणि माझ्यासाठी इव्हन पार्ट म्हणजे एक्स ई ऑफ टी अँड ऑड पार्ट एक्स ओ ऑफ टी कॅल्क्युलेट करायचं आहे. तर तुमच्यासाठी हे प्रॅक्टिस क्वेश्चन्स आहे. या प्रॉब्लेमसाठी तुम्हाला एक्स ऑफ मायनस टी काढायचं आहे. सगळ्यात पहिले तर जनरेट करायचं आहे. कसं जनरेट करायचं ते तुम्हाला कळलेलं आहे. एकदा जनरेट झाल्यानंतर एक्स ऑफ मायनस टी काढा, नंतर एक्स ऑफ 2 मायनस टी. एक्स ऑफ 2 मायनस टी म्हणजे एक्स ऑफ मायनस टी प्लस 2. ओके, त्यानंतर इव्हन पार्ट आणि त्यानंतर ऑड पार्ट. हे काय 4 करायचं. लवकर आलं तर मला व्हॉट्सअप रिप्लाय देऊन द्यायचा. ओके, सो इथे आपण थांबूया आणि नेक्स्ट लेक्चर परत डिस्कस करूया. थँक्यू.